Hello class, welcome back. Welcome back to your computer class. So kids, up to now we have done a lot of things in MS Word and all those things we have done with the help of slides, है ना? हमने slide की help से हमने पढ़ा. But today I am going to start from your book. So this chapter number 6 is feature in MS Word. And what are the things that we have to cover? Word processor, inserting text in document, deleting text in document, undoing features, spelling, grammar, mistakes, thesaurus and so on. Okay. So lots of things we have already done with the help of PPTs and the other thing. Now we are going to start from your book. So let us see what this computer wants to tell us. So this computer wants to tell us, hello children, in the previous class you have learned about MS Word and formatting in it. Now we will move little further and learn about the different feature provided in MS Word. Okay, now see. First thing is word processor. I have already explained you word processor. So all of you know that word processor software is used for writing text. So this we all know that word processor software is used to writing text. It also provides different features that are helpful while creating the document. Different features that help us in creating document. Okay, now next is the different feature are inserting and deleting text, spelling and grammar, thesaurus, find and replace, bullets and numbering and other. These all are the different feature of a word processor or we can say MS Word. ये सारे क्या है? MS Word के अलग अलग से feature है. So what we will do, we will read them one by one. Now first thing here is inserting text in the document. First thing is inserting text in the document. So you can easily add or insert new text in your document. See, click on the location in your document where you want to insert new text. What you have to do? You just have to click on the location where you want to add text. तो ये तो पता है ना कि कहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं. हमारे स्क्रीन पे क्या होती है? एक ब्लिंकिंग लाइन होती है. हमारे स्क्रीन पे एक ब्लिंकिंग लाइन होती है and there we write the text. So what happened? Click on the location in your document where you want to insert new text. Okay. Now next is what will happen? Insertion point appears. What will happen there? Insertion point क्या होगा? वहाँ पे appear होगा. Then the text you type will appear where the insertion point flashes on the screen. तो जहाँ पे आपकी स्क्रीन पे इंसर्शन पॉइंट आएगा वहां पे क्या होगा? टेक्स्ट अपीयर होगा. ओके. Now what is the next point? Type the text you want to insert. Next you have to type the point that you have to insert. To insert a blank space, press the spacebar on the key. The word to the right of the new word text move forward. Okay, so this is how we can insert the text in the document. This is the way by which we can insert the text in our document. Okay, so let us do it. Let us practice this here. So let me open the file. Okay. So this is the file and now let us do it. See,
suppose if I want to add something here before the full stop and after the valley and before the full stop, suppose I want to add something here. So what I have to do? I just have to type the word here. देखो क्या किया, मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना था, तो what I have did, I just have put my mouse pointer here. यहाँ पे माउस पॉइंटर इंसर्ट किया, तो देखो अब स्क्रीन पे आपको एक फ्लैशिंग लाइन दिख रही होगी, है ना? तो विद द हेल्प ऑफ दैट फ्लैशिंग लाइन, what we can do, उसके हेल्प से अब यहाँ पे we can type anything, whatever we want to type we can type there. Okay, now so this is how we can insert the text. This is the way how we can insert the text. Okay, moving ahead. Now next is update your knowledge. So let us update our knowledge. Press the insert key from the keyboard for overtype mode. What you have to do, you have to press the insert key on the keyboard for the overtype mode. In overtype mode, word replace existing text to the right of the insertion point character to character. ठीक है? Now next is deleting a text in a document. Now next is suppose हमने कोई आर्टिकल लिखा जहाँ पे कुछ ऐसी स्पेलिंग एरर या कुछ ऐसी हमसे क्या हो गई, गलतियां हो गई. नाउ वी वांट टू डिलीट इट. जब हम उसे रीड कर रहे थे तो नाउ वी वांट टू delete it. So these are the steps by which you can delete the text in a document. So you can remove or delete the text that is no longer needed. What you have to do? Select the text that you want to delete. What you have to do? You have to select the text that you want to delete. सबसे पहले first thing is that you have to select the text. Then press the delete key from the keyboard to remove the text. Let us do. Okay, now here suppose if I want to delete the heading of this document. If I want to delete the heading of the document, okay, तो सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया एंड नाउ सेलेक्ट करने के बाद क्या किया, डिलीट पे प्रेस कर दिया. देखो डिलीट पे प्रेस करते ही व्हाट हैपेंड, टेक्स्ट वहां से क्या हो गया, डिलीट हो गया. टेक्स्ट वहां से क्या हो गया, डिलीट हो गया. Okay, so this is the way how you can delete the file or delete the word from a existing document. Now suppose if I want to delete the first line, if I want to delete the first line, so what I have to do, फर्स्ट लाइन को क्या किया, फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट किया एंड देन जस्ट प्रेस द डिलीट. फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट किया एंड फिर बस क्या किया, डिलीट किया, है ना. Okay, see this is how you can insert or delete the text from your document. This is the way how you can insert or delete the text from your document. Now after deleting the text disappears, the remaining text in the line or paragraph move to fill the empty spaces. Now next is undoing a feature. Next is what you have, if you want to undo something, undo means what, कुछ suppose what you have done, you have by mistake delete some text, now you want them again on your file. So with the help of undo feature you can get that text back. Okay, so let us read. The undo feature on the quick access toolbar is used to reverse actions you take while working in a document. So what happened? Undo feature helps you to reverse a. Okay, this feature is helpful
when you by mistake delete text and want to recover it. तो जब अगर कभी गलती से हमसे कोई टेक्स्ट डिलीट हो जाए, now we again wants to recover it, so there we can use this feature. There we can use this feature. Okay, let us do it. Let us try to do it. Now, चलो, so here I am going to delete the वाराणसी. मैंने क्या किया, वाराणसी यहाँ पे लिखा है, I have deleted it. ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया. Now I want it back. तो what I will do? Okay, see, मैंने डिलीट कर दिया. Now अब मैं क्या करूंगी, अपनी स्क्रीन पे Ctrl plus Z I will type. Not Z but Ctrl plus Z. See what happened? वाराणसी हमारे स्क्रीन पे क्या हो गया, वापस आ गया. चलो फिर से देखते हैं. मैंने इसको डिलीट किया. Now इधर देखो, here you are getting under the file, you are getting the two option, back arrow and front arrow. So if you click on this is undo button. और जैसे ही हमने undo button पे क्लिक किया, what happened? undo बटन पे क्लिक करते ही what happened? जो टेक्स्ट डिलीट हो गया था वो वापस से हमारी स्क्रीन पे क्या हो गया, रीअकर हो गया. Okay. Now next thing is spelling and grammar mistake. Next thing that we are going to do is spelling and grammar mistake. Spelling and grammar mistake. Okay. So while inserting text in MS Word, so while you insert text in MS Word, you might have noticed the word underlined with the red and green color. What happens sometime कोई word होता है वो red या green कलर से क्या होता है, अंडरलाइन हो जाता है. These wavy colored lines identify the spelling and grammatical mistakes in your document. The red wavy line show the spelling mistake. The green wavy line shows the grammatical mistake. So the red wavy line shows the spelling mistake and the green wavy line shows the grammatical mistakes. Okay, so the spelling and so MS Word provide us this feature also where we can easily correct our spelling and grammar error, where we can easily correct our spelling and grammar error. Okay, now next is the word compares every word of the document with the words in the dictionary. So what happened here, words compare every word in the of the document. आपने वो डॉक्यूमेंट में जो भी चीजें लिखी हैं उसको वर्ड किससे कंपेयर करेगा, डिक्शनरी वर्ड से कंपेयर करेगा. If the type word does not match with the word in the dictionary, it is considered as misspelled and is underlined with a red wavy line. So what happen, अगर कोई word है जो कि स्क्रीन पे हमारे रेड वेवी लाइन से दिख रहा है, दैट मीन्स वो वर्ड MS वर्ड के डिक्शनरी में हमें नहीं मिला था, दैट्स वाई वो वहां पे हमें रेड वेवी लाइन पे दिख रहा है. तो नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन डू दैट. Now click on the review tab on the ribbon, click on spelling and grammar button. Word automatically underline the misspelled word in red. What happened? Word automatically underline the misspelled word in the red. Okay, now next is let us practice this. चलो करके देखते हैं. Okay, not on this document but on this document. ठीक है, तो अब see now what I am going to do, I am going to click on review tab. अब देखो मैंने review tab पे क्लिक किया and I have clicked on the editor. ठीक है,
नाउ अच्छा चलो आई एम गोइंग, चलो मैं यहाँ पे ओल्डेस्ट की स्पेलिंग अगर मैं गलत कर दूं, सो सी व्हाट हैपन, सॉरी, ओल्डेस्ट की स्पेलिंग मैंने यहाँ पे क्या की, गलत कर दी। सी तो व्हाट हैपन, जब मैंने ओल्डेस्ट की स्पेलिंग गलत कर दी तो अब देखो मेरी स्क्रीन पे क्या हुआ, ओल्डेस्ट के नीचे देखो व्हाट हैपन, एक वेवी लाइन आ गई ना, ओल्डेस्ट जो वर्ड है उसके नीचे क्या हो गई, एक रेड वेवी लाइन आ गई। तो अगर मैं अब इस पे क्लिक करती हूँ तो सी व्हाट हैपन, मुझे स्पेलिंग ऑप्शंस मिल रहे हैं, ओल्डेस्ट, लॉस्ट, मोलेस्ट, सो आई हैव टू टाइप ऑन ओल्डेस्ट। अब मैंने ओल्डेस्ट कर दिया तो ये क्या हो गई, मेरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक गलत वर्ड ऐड कर दूं एंड, तो अब देखते हैं क्या होता है। ओके, नथिंग, नाउ अच्छा चलो अब आगे करके देखते हैं हम, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे सिट की स्पेलिंग को कुछ चेंज कर दिया, सपोज मैंने सिट की स्पेलिंग, सीट की स्पेलिंग मैंने सीट कर दिया, सो सी व्हाट हैपन, अब देखो इसके नीचे भी क्या हो गया, इसके नीचे भी क्या हो गया, रेड वेवी लाइन, उसके नीचे भी क्या हो गई, आने लगी, उसके नीचे भी क्या हो गई, रेड वेवी लाइन आने लगी, है ना। सो आई विल क्लिक ऑन दैट, आई विल क्लिक ऑन द सजेशन और देखो यहाँ पे आई एम गेटिंग द ऑप्शन, ठीक है। सी अभी जो हमें अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज वन स्पेलिंग इज रॉन्ग एंड ग्रामर क्या है, ग्रामर इज करेक्ट, ग्रामर इज करेक्ट बट वन स्पेलिंग इज व्हाट, वन स्पेलिंग इज रॉन्ग इन द डॉक्यूमेंट, है ना। तो दिस इज हाउ थिसारस, दिस इज हाउ एमएस वर्ड हेल्प अस टू, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन क्लिक ऑन द स्पेलिंग, तो अब देखो ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, ये स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखो दिस इज हाउ एमएस वर्ड हेल्प्स अस टू करेक्ट अवर ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये एक तरह की प्रूफिंग करता है हमारे ग्रामेटिकल एरर और स्पेलिंग एरर को, ये क्या करता है, करेक्ट करता है। ओके नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट थिंग, chalo let us move back to our pdf and see what is the next thing. So we have done up to here, now moving ahead. Now if the word find an error in your document, spelling and grammar dialog box appear, तो जब भी हमारे MS Word में हमसे कोई गलती होगी तो what will happen, spelling and grammar dialog box will appear, this not okay now, तो दिस सजेशन एरिया डिस्प्लेस सजेशन फॉर करेक्टिंग एरर, जैसे अभी मैम ने सीट की स्पेलिंग गलत की तो वहां पे क्या हो गया, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे मेरे पास ऑप्शंस आने लगे, वहां पे मेरे पास क्या हुआ, वहां पे मेरे पास ऑप्शंस आने लगे थे कि भाई इनमें से कोई कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, वॉट एवर द स्पेलिंग यू हैव रिटन इज रॉन्ग, ओके। Now moving ahead, click on the suggestion you want to click on the suggestion you want to use for correcting the error. Click on the change to the correct the error in your document. Now the next
option is click on the suggestion you want to use for correcting errors. Now click on the change to correct the error in your document. अच्छा ठीक है, तो now suppose these are all are the steps जिसको हम करके we can correct the errors in our document. Now suppose if I don't want, अगर मुझे लगता है कि whatever the spelling I have written is right and that is according to the document, तो what I can do, I have one more option left to skip. चलो मैम करके दिखाएं, जैसे यहाँ पे सपोज यहाँ पे अगर मैं दे की जगह द कर दूं, नो सपोज अगर मैं दे की जगह दे ऐसा कुछ कर दूं, तो सी व्हाट हैपन, यहाँ पे एक रेड वेवी लाइन आ गई. तो व्हेन आई विल क्लिक ऑन दिस रेड वेवी लाइन, देखो हियर आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ ऑप्शन, बट वन ऑफ दीज ऑप्शन इज इग्नोर ऑल. That means if my spelling, if I think that my spelling is right, so what I can do, I can click on ignore. So when I will click on ignore, तो word will accept my document as it is, है ना. Okay, now moving back to our PDF. Now next is to skip. Okay, so we have done it, ignore once, ठीक है. To skip error, and all other occurrence of error in your document, click on ignore all or ignore rule. Okay, now the name of the button depends on whether the error is misspelled word or a grammar error. तो ये मैटर करता है कि जो हमारे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है वो स्पेलिंग के लिए ओपन हो रहा है या ग्रामर के लिए ओपन हो रहा है. सी यहाँ पे जब हम वर्ड पे जाते हैं तो देखो हियर आई एम गेटिंग टू ऑप्शन, स्पेलिंग ऑप्शन एंड ग्रामर ऑप्शन, है ना. हियर आई एम गेटिंग टू ऑप्शन, स्पेलिंग ऑप्शन एंड ग्रामर ऑप्शन. ओके सी, तो वही चीज वहां पे भी आपकी बुक में भी वही चीज मेंशन है कि जब ये डिपेंड करता है कि किस तरह की डायलॉग बॉक्स की कैसी एरर हमारे डॉक्यूमेंट में हुई है. Okay, now see, correct or ignore the misspelled word and grammatical error until the dialog box appears telling you that the spelling and grammar check is complete. Click on OK to close the dialog box. What you have to do, you have to click on the OK to close the dialog box. Now next is correcting a mistake by right clicking. अच्छा, so we can do it by right clicking also. ठीक है, let us see how we can do this. नाउ दिस वर्ड इज रॉन्ग. अब मैं अगर यहाँ पे राइट क्लिक करती हूँ, ठीक है, इफ आई क्लिक हियर ऑन राइट क्लिक, तो देखो हियर आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ ऑप्शन. उसमें से एक ऑप्शन है ओपन सजेशन. तो इफ आई ओपन सजेशन, तो यहाँ पे मुझे मेरी स्पेलिंग मिल जा रही है, मेरी करेक्ट स्पेलिंग आई विल गेट देयर. So correcting a mistake by right clicking. So correcting a mistake by right clicking. When you find spelling or grammar mistake, right click on the underlined text. When you find a spelling or grammar mistake, right click on the underlined text. The menu that appears shows the possible corrections. Click on the correction from the menu. To ignore error, you can click on ignore or click on ignore all for all the instance of the error. Now next is let us update our knowledge. Next point is update your knowledge. So when you type a word and that doesn't appear in the dictionary, ठीक है, what happen when you type a word
and that doesn't appear in the dictionary, word underline the word as misspelled. Word underline the word as misspelled. The word might be term that you use regularly. If so, click add to dictionary so that word stop underlying the word as a misspelling. So this can be done. ठीक है, so this तो we can do. तो what मतलब कहने का क्या कि अगर कोई वर्ड जो हमें चाहिए वो हमें डिक्शनरी में नहीं मिल रहा और बार बार जब हम वो वर्ड को लिख रहे हैं तो वो हमें एरर बता रहा है. So we can add that word in our dictionary. What we can do? We can add that word. So we can add that word in our dictionary. Now, next step is using the thesaurus. Using the thesaurus. A thesaurus is a list of words grouped together containing synonyms, antonyms. MS Word provide a thesaurus through which you can find word to express meaning more accurately. So you can use the a thesaurus is a list of words grouped together containing synonyms and antonyms. MS Word provide a thesaurus through which you can find the word to express meaning more accurately. Okay. Now, select the word. Select the word for which you want a thesaurus. ठीक है, so what we can do? Well, you have to select the word for which you want a thesaurus. ठीक है. Now, click on the review tab. Next is what you can click on the review tab. Now, next is click on thesaurus button. Now, next is what? Thesaurus button. The research task pane open and display the suggested replacement for the word. चलो करके देखें if we can get this or not. ठीक है. So let us try. If I try, अगर मैंने हिस्ट्री को किया and then अगर मैंने इस पे प्रेस किया, am I getting review option here? Search history, translate. I can translate it. Paragraph option. No, I'm not getting that option here. But thesaurus option is available. चलो अब आगे देखते हैं. देखो अभी because I'm using the online MS Word, that's why I'm not getting that option there. But once you will use that on the software, you will get the option in that. So thesaurus basically help in finding the synonyms and antonyms of the word. Synonyms and antonyms अगर आपको word का चाहिए तो आप क्या कर सकते हो? thesaurus को आप use कर सकते हो. Okay now. ठीक है. Now here the word from thesaurus replace the selected word in the document. Click on the close to close the task pane. फिर आप क्या कर सकते हो? टास्क पैन को क्लोज कर सकते हो. Now here we are having update your knowledge. So you can press shift plus F7 to use thesaurus and alt plus R plus E to suggest other word with a similar meaning. See, alt plus R plus E to suggest the other word. Alt plus R plus E to suggest the other word. Okay, got it? So kids, this is it for today. We'll catch you in the next class.